Okay. So yesterday, I think we have completed this boundary conditions. Okay, so boundary conditions. When we will study these boundary conditions, when there is electromagnetic wave which is propagating from medium 1 to medium 2. Okay, so medium 1 and medium 2, they will have different properties. So properties means the value of, you can say, sigma, mu, and epsilon. Okay, so these values will be different. So if the wave is traveling from medium 1 to 2, then there is a interface. Okay, there is a junction, there is a boundary. So at boundary, what will happen with the different components of electric field intensity, magnetic field intensity, electric flux density, magnetic flux density. So all those we have studied. Okay, so basically any vector will be, first of all, it will be split into two parts. One is horizontal component, equivalent horizontal component, and equivalent vertical component. So vertical component is called as normal component, and horizontal component is called as tangential component. So we have seen these boundary conditions. Now, what I will do, all of you, please write down this. This I have added yesterday, so you can get a better idea what is electrostatic field, or who is responsible for electrostatic field. What is magnetostatic? Who is responsible for that? So just write down this. So write down this: stationary charges will produce electrostatic fields. Write down this: stationary charges. Stationary charges will produce electrostatic fields. Okay, means if there is a charge which is a stationary, okay, it is residing at some point, so that will produce electrostatic field. Okay, so that is the electrostatic. So completely it is electrostatic. There is no magnetic component over there. Next, write down steady currents. So steady current means the current which is not changing, which, or you can say whose amplitude is not changing with the time. So steady current we can say as a DC current. Okay, so steady current is it is nothing but a DC current. So write down: steady current will result into magnetostatic field. This one. Steady current will result into magnetostatic fields. And third one is the time varying current. Third category is the time varying current, and this time varying current will give electromagnetic field, which is also called as EM waves, or you can say waves. So time varying current are only responsible for the electromagnetic field, or you can say EM waves. So ये याद रखो, this is very important. So अगर तुम लोग के पास सिर्फ स्टेशनरी चार्ज है, so it cannot produce electromagnetic wave. Okay, so wave यहाँ पे produce नहीं होगा. Similarly, in case of steady current, wave won't be produced. So in order to generate wave, in order to have electromagnetic field, we need time varying current. Okay, and this is the base of your antenna. So antenna में तुम लोग को पता चलेगा, if you give DC current to antenna, then it will not radiate, it won't radiate. Okay, DC current दिया है तो वो radiation नहीं मिलेगा आपको, wave will not propagate. So in order to have the propagation of wave, we need time varying currents. So हम लोग antenna को जो भी current जाता है, that is always time varying current. It is called as AC current. So this is very important. This can be asked in Viva. So इसलिए ये note down करके रखो. So next, now we'll move to the, I think yesterday you have written this topic name, EM wave propagation through three different mediums. Okay, so we are going to see how what is the equation of electromagnetic wave, how it is represented by, what are the different parameters of the wave, uh, and how those equations will change based on the change in the medium. That means if there is a perfect dielectric, what will be the change? If it is a perfectly conductor, what will be the change? Okay, if it is a lossy dielectric, then what is the change? So all those things we are going to study. Yesterday you have written these four conditions. Free space matlab kya? Free space, how to characterize this free space using sigma, epsilon and mu value. Similarly, you have written these lossless dielectrics कैसे define करते हैं, lossy dielectric कैसे define करते हैं, good conductors कैसे define करते हैं. So when we say good conductors, there's the sigma, which is called as conductivity of the material or medium. That sigma is approximately equal to infinity. So approximately मतलब तुम लोग बोल सकते हो sigma का value is very high. And मैंने तुम लोग को कल एक fifth category लिख के दिया था. That fifth category is called as a perfect conductor. So perfect conductor मतलब क्या? Perfect conductor means sigma का value will be equal to infinity. Okay, so it is not written over here, but that is there,
and when we are analyzing antenna वगैरह, उस time पे तुम लोग को we will take that case that if there is a perfect electric conductor PEC boundary. So if there is a PEC boundary, how that antenna is going to affect, that antenna is going to react. So वो सब हम लोग देखने वाले हैं, इसलिए तुम लोग को ये पता होना चाहिए if it is a perfect conductor then sigma का वैल्यू क्या होता है. So sigma is equal to infinity at that time. Now all of you just write down this statement wave. अभी हम लोग wave का equation study करने जा रहे हैं. So wave, पहले wave क्या होता है वो तुम लोग को पता होना चाहिए. So write down wave is a function of both space and time. Write down wave is a function of both space and time. ओके, तो वेव क्या है? इट इज़ अ फंक्शन ऑफ बोथ स्पेस एंड टाइम. अभी यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, सपोज कंसिडर अ साइन वेव सिंपल. सो यहाँ पे व्हेन अ डिस्टर्बेंस एट पॉइंट ए, ओके, वेव मोशन कब होता है? वेव मोशन अकर्स व्हेन अ डिस्टर्बेंस एट पॉइंट ए एट टाइम टी जीरो. ओके, सो टी जीरो पे एक पॉइंट ए पे डिस्टर्बेंस हुआ एंड दैट इज रिलेटेड टू व्हाट हैपेंस एट पॉइंट बी एट टाइम टी ग्रेटर देन जीरो. ओके, सो वेव हम लोग तभी बोल सकते हैं इफ देर इज अ रिलेशन. कौन सा रिलेशन? देर आर टू डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द वेव यू कैन से. ओके, एंड वन सपोज यू आर टेकिंग वन पॉइंट एट टी जीरो टाइम इंस्टेंट एंड दूसरा पॉइंट बी ले रहे हो विच इज एट टी टू टाइम इंस्टेंट विच इज ग्रेटर देन टी वन. So there is a relation, there is some relation between these two. So that is called as wave. So now wave equation, just write down wave equation in one dimension. That is called as a scalar wave equation. Write down wave equation in one dimension, or you can write down as scalar wave equation. The scalar wave equation is given as, write down equation 10.1. Now you know that wave is a function of both time and space. Okay, तो हम लोग दोनों को एक साथ consider करके we cannot write the function. So what we will do, we will consider one dimension at a time. So one dimension consider करके we will write the equation of wave, and that is called as a scalar wave equation, which is given here as 10.1. So if we write down that dabba square e upon dabba t square minus u square into dabba square e upon dabba z square, which is equal to 0. So this is a scalar wave equation and it is in one dimension. Completed with equation 10.1. Yes or no? Yes, ma'am. ओके, ठीक है. अभी हम लोग को इक्वेशन थोड़ा डिटेल में देखेंगे. नाउ दैट इज द, ये कौन सा इक्वेशन है? इट इज पार्शियल डिफरेंशिएशन, डिफरेंशियल इक्वेशन है, सेकेंड ऑर्डर. हेलो, Yes, ma'am. ओके. अभी डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हो तुम लोग को पता है. नाउ वी आर नॉट गोइंग टू सॉल्व दैट कंप्लीट इक्वेशन वगैरह. ओके, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पे हम लोग सॉल्व नहीं करने वाले. वी विल डायरेक्टली राइट डाउन द सॉल्यूशन. ओके, सो अपने को करना क्या एक्चुअली, यूजिंग मैथमेटिक्स you can solve this partial differential equation of second order, and you can write down the solution for capital E. Now what is capital E over here? Capital E क्या है यहाँ पे? क्या है capital E? Write down capital E is electric field intensity. Capital E is electric field intensity, and write down the solution for above differential equation, partial differential equation is given as follows. Write down now this solution, that is capital E is equal to A into e raised to j in bracket omega t minus beta z, then plus capital B is a constant into e raised to j, एक minute, write down this, E is equal to solution of the differential equation. Write down 10.4c, equation 10.4c. Okay, now write down in this equation, what about capital A and capital B? These two are constant. Write down A and B are real constants.
A and B are real constants. Okay, now in 10.4c, you have an equation with e raised to j term, okay? E raised to j theta, e raised to minus j theta, like that. So what you can do, you can solve that equation or you can represent that equation in terms of real plus imaginary, okay? ये तुम लोग को पता है कैसे करते हैं. So if you have e raised to something equation, you can represent that in terms of मतलब exponential को you can convert into sine cosine, okay? So what we will do, write down, considering only imaginary part of the above equation, or equation मतलब solution equation 10.4c, considering only imaginary part, we can write. So मैंने बोला तुम लोग को, जैसे इसको तुम लोग डिकम्पोज कर सकते हो इन कोसाइन एंड साइन फंक्शन. सो साइन इज ऑलवेज, यू नो दैट कोसाइन जो रहता है वो इट विल इंडिकेट द रियल पार्ट, वेर एज साइन जो रहता है वो imaginary part indicate करेगा. Okay, so here now we will write only imaginary part. So write down imaginary part can be written as, write down equation 10.5. Imaginary part of above equation can be written as E is equal to A into sine of omega t minus beta z. Ma'am, Hmm. ma'am, why we are not considering imaginary part of B? What? Uh, for equation 10.5, why we are not considering imaginary part of B? B sine Part omega of t plus beta z. Like it will also come in imaginary part, right? okay, okay. Okay, that I have to check. So I will I will check it and come back to you later. First, for time being, Okay, consider ma'am. this. Uh, Okay, so now we have 10.5. E is equal to A sine omega t minus beta z. In this equation, what is this A? A is what? Write down. Write down A is called as, sorry, first write down, it is the time harmonic. Now you can say this is a sine function, so it is a harmonic. So it is a time harmonic. Time harmonic means after some time it will repeat, okay? Sine signal तुम लोग को पता है. So it will have repetition, it will have some time period. So that is called as a time harmonic. So write down first, what is observation? What is your observation from this particular equation? That is 10.5. So write down first point. It is time harmonic because we assumed it is time harmonic because we assumed time dependence e j omega t. We assumed time dependence e j omega t to arrive at equation 10.5. Write down second observation. Capital A. Now in this equation, what is capital A? So capital A, write down, capital A is called as amplitude of the wave. Capital A is called as amplitude of the wave. And what will be unit of capital A? What will be the unit of capital A? It is same as capital E. ओके, याद करो तुम लोग जो इक्वेशंस लिखते थे, वोल्टेज और करंट. सो व्हेन वी आर राइटिंग वोल्टेज, सपोज इफ यू वांट टू रिप्रेजेंट वोल्टेज एज अ साइन फंक्शन, तुम लोग क्या करोगे, v इज इक्वल टू a, ओके, a sin omega t, like that. So what is a? A is the nothing but amplitude of that voltage. ओके, सो a का यूनिट क्या रहेगा, जो वोल्टेज का यूनिट है वही a का यूनिट रहेगा, राइट? सिमिलरली यहाँ पे इट इज दिस फंक्शन, दिस साइन फंक्शन इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. सो दैट्स वाई ये जो ए है, ए यहाँ पे क्या दिखा रहा है, इट इज द पीक एम्पलीट्यूड. सो ए इज शोइंग द पीक एम्पलीट्यूड और यू कैन से मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, and obviously that has to that its unit will be its unit will be same as that of capital E. So write down, A is called as amplitude of the wave.
A is called as amplitude of the wave, and unit of A is same as that of electric field intensity. Okay, write down third observation. Third. What is the third observation? Sine of something. So यहाँ पे जो sine of something है, what is that? It is nothing omega t minus beta z. Write down this omega t minus beta z is called as phase of the wave. Omega t minus beta z is called as omega t minus beta z is called as phase of the wave. Omega t minus beta z is called as phase of the wave. Phase in radians means here unit will be radian. This unit of this phase is radian. अभी ये फेज का इक्वेशन देखो. व्हाट इज फेज? इट इज ओमेगा टी माइनस बीटा जेड. तो वो किस पे डिपेंड है? राइट डाउन दिस फेज इज डिपेंडेंट ऑन और इट डिपेंड्स ऑन टाइम टी. दिस फेज डिपेंड्स ऑन टाइम टी and what is the another variable over here? Oh, t is the time. Okay, what is another variable in this omega t minus beta z में? Another variable is z. Right down. So ये जो इक्वेशन है, ये जो फेज है, ये फेज किस पे डिपेंड कर रहा है? t पे. t मतलब टाइम एंड z इज कॉल्ड इट इज अ स्पेस वेरिएबल. ठीक है, so z is a space variable on time t and space variable z. So what about omega and beta? So omega and beta are constants. ये वहाँ पे लिख के रखो कहीं पे. तो omega and beta are constant. नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट. अभी हम लोगों ने बोला कि ओमेगा एंड बीटा कांस्टेंट है. तो कांस्टेंट मतलब क्या? उसको क्या बोलते हैं? ओके, सो राइट डाउन फोर्थ पॉइंट. ओमेगा इज कॉल्ड एज एंगुलर फ्रीक्वेंसी. Omega is called as angular frequency. Unit is radian per second. Omega is called as angular frequency. Unit is radian per second. And next is beta. Write down beta is called as a phase constant. Beta is called as phase constant or wave number. And its unit is radian per meter. So beta का unit radian per meter. Now next write down equation 10.6 है. ये वाला equation लिखो. Now it is a wave. Okay, so wave है मतलब it will have some time period. Okay, हम लोग ने कौन सा फंक्शन यहाँ पे कंसिडर किया है? Here we have considered sin function. So तुम लोग को अभी हम लोग यहाँ पे we will define lambda, we will define u, we will define t, and the equation which will relate all these three is write down 10.6a. Lambda is equal to u into t. Lambda is equal to u into t. Now what is lambda? Lambda क्या होगा? Wavelength of the wave. Wavelength. Yes, write down wavelength. जो wave है उसका wavelength. Lambda is wavelength. Next, what is capital T? क्या हो सकता है capital T? Time period. Write down. Capital T is time period. Next side में ये भी लिखो. So frequency is given by 1 by t. Frequency of the wave will be given by 1 by t. Capital T is time period. And what is u now? U क्या है यहाँ पे? Velocity. U is a velocity. Speed. यहाँ पे speed है. Write down u is speed. So we can write this equation. Lambda is equal to ut. And जो हम लोग f बोल रहे हैं, f is a frequency मतलब number of cycles per second. So frequency का unit is what? Hertz. What is the unit of frequency? Hertz. Okay.
So you have written this 10.66a. Now, write down u is equal to, अभी जो प्रीवियस इक्वेशन लिखा था वहाँ पे डू वन थिंग, रिप्लेस टी बाय 1/f. टी जो था टाइम पीरियड, replace that by 1/f and try to get 10.6b. Try to get 10.6b. मिला सबको? ये जो इक्वेशन है ये याद रखो, बाद में न्यूमेरिकल सॉल्व करना है उस टाइम पे दीज इक्वेशंस आर रिक्वायर्ड. टेन पॉइंट सिक्स भी कंप्लीटेड. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके नेक्स्ट. अभी ओमेगा, ये तो तुम लोगों से ऑलरेडी ये पता है फॉर्मूला. राइट डाउन ओमेगा, दैट इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज गिवन बाय ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ. 10.7a लिखो. ओमेगा इज 2 पाई एफ. ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी. Next, write down 10.7b, that is beta. Beta is what? Phase constant. It is equal to, write down omega by u. Beta is equal to omega by u. Beta is equal to omega by u. Next, write down 10.7c, that is time period. So you can write time period as 1/f, which is also equal to 2 pi by omega. So ये formulas तुम लोगों ने physics में भी पढ़े हैं. So omega is equal to 2 pi by t. This is not new. So now next here, just see this table 10.1, that is electromagnetic spectrum. Okay, so what are the different electromagnetic waves? Okay, कौन से phenomenon है, and what are the examples of uses, मतलब वो कहाँ पे use होते हैं, and what is the approximate frequency range. So just see this table. So cosmic rays, what is the example of uses? Physics and astronomy में use होता है cosmic rays. What is the frequency of it? It is 10 raised to 14 gigahertz. Okay, 10 raised to 14 gigahertz मतलब बहुत ज़्यादा हो गया है. तो 10 raised to 14 gigahertz and above. उसके बाद नेक्स्ट गामा रेज. सो गामा रेज कहाँ पे कैंसर थेरेपी भी यूज करते हैं. व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी? 10 raised to 10 to 10 raised to 13 gigahertz. Then X-rays, X-ray examination 10 raised to 8 to 10 raised to 9 gigahertz. ओके, तो ऐसे ये डिफरेंट इलेक्ट्रो स्पेक्ट्रम है पूरा ये. सो लास्ट में यहाँ पे है, यू कैन सी माइक्रोवेव. सो माइक्रोवेव्स, व्हाट इज द एग्जांपल यूज? रडार एंड माइक्रोवेव रिलेज, सैटेलाइट कम्युनिकेशन में जो यूज होता है. And what is the frequency range? It is 3 to 300 gigahertz. Okay. उसके बाद और एक था, एक मिनट, रेडियो वेव्स. तो रेडियो वेव्स में सी वी आर यूजिंग टेलीविजन. तो टेलीविजन में देयर इज यूएचएफ बैंड, वीएचएफ बैंड. ओके, सो यूएचएफ बैंड का व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी? सो व्हाट यू विल डू, ये बाद में टेबल ठीक से स्टडी करो एंड ट्राई टू एटलीस्ट कुछ तो मतलब फॉर एग्जांपल यू शुड नो व्हाट इज द माइक्रोवेव. सो माइक्रोवेव का फ्रीक्वेंसी कहाँ से कहाँ तक होता है. Okay, you should have that idea. What is the infrared? If you are saying infrared radiation, then what is the frequency range? Okay, because this can be asked in Viva. What is the electromagnetic spectrum? What are the different rays? Okay, what is the usage and what is the frequency range? So like that. So when you are saying UHF, that is ultra high frequency. So what is the range? So that is 470 to 806 megahertz. VHF television मतलब और FM रेडियो, दैट इज 54 to 216 मेगाहर्ट्ज. उसके नीचे आता है शॉर्ट वेव रेडियो, दैट इज 3 to 26 मेगाहर्ट्ज. और फिर AM रेडियो, दैट इज 535 to 1605 किलोहर्ट्ज.
सो तुम लोगों ने देखा यहाँ पे किलो हर्ट्ज से लेके 10⁻14 गीगाहर्ट्ज तक कैसे कैसे डिफरेंट रेज आते हैं एंड हाउ वी आर यूजिंग दोज डिफरेंट रेज इन डिफरेंट एप्लीकेशंस. ओके, सो ये थोड़ा सा तुम लोग इसको याद रखो. एटलीस्ट तुम लोग को यूएचएफ क्या होता है, वीएचएफ क्या होता है, व्हाट इज द एप्लीकेशन, इंफ्रारेड का रेंज क्या है, अल्ट्रावायलेट का रेंज क्या है. ओके, एक्स रेज, कॉस्मिक रेज मतलब सबसे ज़्यादा, दैट इज 10⁻14 गीगाहर्ट्ज. तो ये थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए. नाउ नेक्स्ट देयर इज वन एग्जांपल. एक मिनट. Okay, now there is one example 10.1. So यहाँ पे what it is based on, एक तुम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का इक्वेशन दिया है. सो यू कैन सी हियर एग्जांपल 10.1. So electric field in free space is given by, okay, so electric field is in free space is given by capital E is equal to 50 into cos of 10 raised to 8t plus beta x into ay. So ay is what? It is unit vector in the direction of y, and the unit of this E is volt per meter. Okay, so all of you just write down this एक मिनट. Hello. Okay. So this is so what you will do. See, this is example 10.1. You will go through this example. Okay, इसमें कुछ explain करने जैसा है नहीं है. So what you will do, you will just go through this example, and in next lecture अगर ये कुछ इसमें से कोई भी step नहीं समझा, you will ask to me. ठीक है, तो ये अगर डाउट है तो पूछो, अदरवाइज मुझे लगता है तुम लोग को समझ में आएगा. सिंपल स्टेप से यू हैव टू जस्ट ई का इक्वेशन दिया हुआ है, यू हैव टू कैलकुलेट डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन, कैलकुलेट बीटा, बीटा का वैल्यू कैलकुलेट करना है, एंड यू हैव टू स्केच द वेव एट t इज इक्वल टू 0, t/4 एंड t/2. सो यहाँ पे ऑलरेडी इट इज सॉल्व, पूरा सॉल्यूशन यहाँ पे दिया हुआ है. यू जस्ट गो थ्रू दिस सॉल्यूशन, और इसमें से अगर कुछ नहीं समझा, कोई स्टेप नहीं समझा, यू कैन आस्क दैट इन द नेक्स्ट लेक्चर. ठीक है. ओके, नाउ राइट डाउन नेक्स्ट टॉपिक. सो दैट इज होमवर्क टू यू. जो अभी एग्जाम्पल था वो होमवर्क है. नेक्स्ट लेक्चर में तुम लोग अगर कुछ उसमें डाउट है तो पूछोगे. Now write down next topic 10.3, that is wave propagation in lossy dielectrics. Wave propagation in lossy dielectrics. Okay, now here actually what we are going to do, हम लोगों ने 4 टाइम्स के डिफरेंट मीडियम देखे. ओके, फ्री स्पेस, लॉसी डाइलेक्ट्रिक, एक गुड कंडक्टर, ओके, एक लॉसलेस होता है, लॉसलेस डाइलेक्ट्रिक. तो ये डिफरेंट जो अभी मीडियम है उसमें वेव कैसे प्रोपगेट होगा, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी नाउ. तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वी विल कंसिडर अ जनरलाइज केस. जनरलाइज केस मतलब क्या होता है? जनरलाइज केस मतलब ऐसा केस जिसको एक बार तुमने डिराइव कर दिया. ओके, इफ यू हैव डिराइव्ड द जनरलाइज केस, देन यू कैन by putting just different conditions in the generalized case, you can derive the equation for any special case. ठीक है, तो ये अभी हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं. तो यहाँ पे ये जो टाइटल है, दैट इज वेव प्रोपगेशन इन लॉसी डाइलेक्ट्रिक. सो लॉसी डाइलेक्ट्रिक इज द जनरलाइज केस. ओके, सो प्लीज राइट इट डाउन. आफ्टर राइटिंग दिस टॉपिक नेम, राइट डाउन wave propagation in lossy dielectrics. Wave propagation in lossy dielectrics is a general case. ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, क्योंकि ये तुम लोग को, क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, सिर्फ एक ही का डेरिवेशन करेंगे, और फिर बाकी केस में हम लोग वी आर जस्ट गोइंग टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज. बस सिर्फ कंडीशन, वो पर्टिकुलर मीडियम का जो कंडीशन है वो पुट करेंगे, एंड वी विल डायरेक्टली गेट द इक्वेशन ऑफ ई एन एच जो भी है. तो इसलिए जनरलाइज केस तुम लोग को पता होना चाहिए, विच इज द जनरलाइज केस. सो यहाँ पे दिस लॉसी डाइलेक्ट्रिक इज अ जनरल केस, एंड from which wave propagation in other types of media, write down this, from which
Wave propagation in other types of media can be derived as a special cases. So is it clear what is general case and specialized case क्या होता है? समझा सबको? लॉसी डायलेक्ट्रिक इज अ जनरल केस और इसके बाद तीन डिफरेंट केसेस आने वाले हैं. दोस थ्री डिफरेंट केसेस आर द स्पेशल केसेस ऑफ लॉसी डायलेक्ट्रिक. ठीक है, तो वो जो तीन का जो इक्वेशन होगा वो हम लोग कैसे करने वाले हैं. जस्ट we will first derive the different equations for Lassey dielectric, and then we will use those equations to derive the equations of other three different media. तो ये इतना ही करना है आपने. Okay, so now we'll see the derivation. सबसे पहले अगर just write down this sentence, this is important. Write down a lossy dielectric is a medium in which. अभी लॉसी डायलेक्ट्रिक होता क्या है वो तुम लोग को पहले डिफाइन करना है. Write down a lossy dielectric is a medium in which an EM wave. Lossy dielectric is a medium in which an EM wave loses power as it propagates. Loses power as it propagates due to poor conduction. Is it clear what is lossy dielectric? Lossy dielectric क्या है? Is it clear from this sentence? Yes, ma'am. Write down. In other words, उसको ऐसे भी बोल सकते हो हम लोग. In other words, a lossy dielectric is a partially conducting medium. Okay. Other words you can write it down. It is also called as partially conducting medium. In bracket you can write down imperfect dielectric or imperfect conductor. मतलब जैसे सेमीकंडक्टर होता है ना उस टाइप का. इट इज इम्परफेक्ट डायलेक्ट्रिक और इम्परफेक्ट कंडक्टर. मतलब कंडक्टर और प्योर डायलेक्ट्रिक के बीच का ही. दैट इज कॉल्ड एज अ लॉसी डायलेक्ट्रिक. With, write down, with sigma not equal to 0. With sigma not equal to 0. In this way we will define the lossy dielectric. Okay, so now that is clear what is a lossy dielectric, and this is the general case. We will derive equations for this. Now write down, while deriving equation we are assuming something. Okay, we are considering some medium and we are assuming something. So write down, consider a linear, write down this thing, consider a linear isotropic, consider a linear comma isotropic comma homogeneous. Consider a linear comma isotropic comma homogeneous. Linear isotropic homogeneous lossy dielectric medium. Lossy dielectric medium that is free. Sorry, lossy dielectric medium that is charge free. Lossy dielectric medium that is charge free. In bracket write down. Now when you say charge free, that means that rho v is equal to 0. Okay, चार्ज फ्री बोल रहे हो मतलब चार्ज जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है उसको हम लोग जीरो अज्यूम कर रहे हैं. सो दैट इज कॉल्ड एज चार्ज फ्री. तो हम लोग ये अज्यूम कर रहे हैं कि ये जो वेव प्रोपोगेट होने वाला है वो ऐसे मीडियम में प्रोपोगेट हो रहा है जहाँ पे कोई ऑलरेडी कोई चार्जेस अवेलेबल नहीं है. ओके, सो दैट इज द चार्ज फ्री रीजन एंड इट इज गिवन बाय रो वी इज इक्वल टू 0. सो दिस इज द अजम्पशन. Now next write down, assuming
and suppressing the time factor e j omega t. Assuming and suppressing the time factor e j omega t, Maxwell's equations become, now we will write the Maxwell's equation for this particular condition. So Maxwell equation becomes, write down these four equations and we'll stop it here. Write down these four equations: 10.11, 10.12, 10.13 and 10.14. So we'll stop it here. Write down these four equation. अभी ये equation में यहाँ पे equation में first equation is del dot es. Okay. So this जो suffix s है यहाँ पे, ये suffix s क्या denote करे? It is a suppressing time factor e omega t. That is the meaning बस. बाकी del dot e is equal to 0. अभी ये equation कैसे आया? Del dot e is equal to 0. Just check. You, I think we have derived this equation. It was del dot d. Okay, del dot d is equal to rho v था. ये पता है इक्वेशन तुम लोग को? del dot d is equal to rho v. याद आया? तो अभी क्या करना है? हाउ विल यू राइट कैपिटल डी? कैपिटल डी इज व्हाट? एप्सिलॉन इनटू ई. तो एप्सिलॉन तो कांस्टेंट है, सो इट विल कम आउट. एंड यहाँ पे जो राइट हैंड साइड में रो वी था, दैट रो वी हैज बिकम जीरो नाउ बिकॉज वी आर अज्यूमिंग अ चार्ज फ्री रीजन. सो यू विल गेट del dot es is equal to 0. ओके, सो जैसे मैंने ये एक्सप्लेन किया, सिमिलरली यू विल ट्राई टू राइट दीज इक्वेशंस. और यहाँ पे जे ओमेगा, व्हाट इज द जे ओमेगा? जे ओमेगा मतलब क्या है? हम लोग ने डाबा बाय डाबा टी जो था, डिफरेंशियल इक्वेशंस जो थे, डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू समथिंग डाबा, ऐसा कुछ था. तो उसमें याद करो. सो वहाँ पे जहाँ पे भी डाबा बाय डाबा टी रहेगा ना, सो दैट डाबा बाय डाबा टी यू आर गोइंग टू रिप्लेस बाय जे ओमेगा. ठीक है, तो ये दो तुम लोग को चीज करना है, एंड देन यू हैव टू राइट डाउन दिस इक्वेशन. सो नेक्स्ट लेक्चर में ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस इक्वेशंस, ये कैसे आया. अगर किसी को नहीं समझा तो विल डिस्कस. मैंने तुम लोग को हिंट दे दिया है. फर्स्ट इक्वेशन के लिए रो वी इज इक्वल टू 0 हम लोगों ने पुट किया है, एंड यहाँ पे डाबा बाय डाबा टी जहाँ पे भी होगा वहाँ पे तुम लोग को यू हैव टू रिप्लेस दैट डाबा बाय डाबा टी बाय जे ओमेगा. देन यू विल गेट दीज इक्वेशंस. ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर में ये इक्वेशंस कैसे आया वो तुम लोग को समझ में आना चाहिए, एंड देन वी कैन प्रोसीड. अगर नहीं समझा देन यू कैन आस्क इन द नेक्स्ट लेक्चर, आई विल एक्सप्लेन यू. बट मुझे नहीं लगता ज़रूरत है, तुम लोग ये खुद करके आ सकते हो क्योंकि मैंने हिंट दे दिया है, दैट इज इनफ. ओके, सो कंप्लीटेड विथ दीज फोर इक्वेशंस. लिखा? कंप्लीटेड? Yes, ma'am. Okay, so we'll meet on Monday. I think you are coming to the college, right? Hello? Ma'am, what's significance of subscriptors? Suppressing time factor. Okay. Okay. Okay, so on Monday you will come. So I think first lecture is EMA only. So we'll meet in classroom. तुम लोग को classroom, I think it will be, मैं बता दूंगी मैसेज करके. ठीक है? So we will meet on Monday. Thank you. Thank you for listening. Okay, ma'am. Okay, you can leave. I have taken the attendance. Bye. Thank you, ma'am. Bye. Okay, thank you.